Hello students, come on, we'll continue the problems on bills of exchange. Last video we have completed the theoretical part, then we have completed the short problems on bills of exchange. So what are the journal entries to be passed in the books of Droyer, Droy, Endorsey, etc. we have seen in the short problems. So if you have watched the short problems, then definitely you got some good grasp on the topic of bills of exchange. So I expect that you are watching my previous videos, then only you can come to the main problems. Otherwise, directly if you come to the main problems, you may not be able to understand. So please watch the theory, then come to the main problems. So before starting the problem, I expect my viewers that you are having the hard copy, print out of all the problems under the description, in the link under the description. So please, before watching the video, take a print out of the problems and keep it ready before watching the video. Then only it will be helpful to understand the problems. Now we'll start the main problem. See the first main problem. On 1st January 2014, Anil sold goods to Naresh. Carefully understand the problem. Understanding the problem is half solved. So Anil sold goods to Naresh for rupees 8,000. Naresh paid 20% cash immediately after deducting a discount of 2%. So out of 8,000, 20% is paid immediately by the buyer. Remaining 80%, a bill of exchange is drawn by Anil on Naresh. For the balance, Anil drew a bill payable after 3 months. On the due date, the bill is honored. Pass necessary journal entries in the books of both the parties. Both the parties means Anil and Naresh. Anil is the drawer, Naresh is the drawee. So you see the entries? Books of Anil, drawer. First entry, when he sells the goods to Naresh. Anil sells the goods to Naresh. So entry will be Naresh account debtor to sales, 8,000. Naresh account debtor to sales, being the goods sold on credit. First entry. This is on January 1st, 2014. Now immediately Naresh paid 20%. So 20% of 8,000, it comes to 1,600. But Anil is allowing a discount of 2%. जितना भी पेमेंट कर रहा है उसका 2% डिस्काउंट इज अलाउड बाय अनिल. तो अभी पे कितना कर रहा हूं, 20% पे कर रहा, तो 8,000 का 20% इट कम्स टू 1,600 रुपीज. 20% हो गया. अब वो 1,600 का 2% विल बी द डिस्काउंट अलाउड. तो 2% ऑफ 1,600, 32 रुपीज. So 32 rupees is the discount allowed by Anil. So 1,600 minus 32, you will get 1,568, 1,568. So Anil will get the cash. Anil will get the cash. So cash account data 1,568. Anil is allowing a discount of 2%, 32 rupees. So discount account data 32 to Naresh, who is the giver. Naresh is the giver. Naresh account is credited by 1,600. Actually Naresh परचेस किया था 8,000, उसमें से 20% यानी 1,600 तक पेमेंट हो गया. राइट? आउट ऑफ 1,600, 2% इज द डिस्काउंट. तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे. लॉस हो गया, अनिल को डेबिट कर दिया. Being 20% of the amount due from Naresh received in cash. Being 20% of goods sold to Naresh is received in cash. Now remaining, out of 8,000, 1,600 you deduct, remaining 6,400. For 6,400, Anil is drawing a bill on Naresh. Naresh accepts the bill and return the bill back to Anil. अब अनिल के पास बिल आ गया, तो bills receivable account data to Naresh account. Bills receivable account data to Naresh, 6,400, being the acceptance of Naresh received for the balance amount. Now on the due date. The due date. What is the duration of the bill? The duration of the bill is given as 3 months. 3 months is the duration. When the bill is drawn, January 1st, February, March, April. April 1st को maturity हो गया. तो April 1st, 2nd, 3rd. तो 4th April will be the due date. तो April 4th, he is receiving the cash. Anil presents the bill for payment to Naresh. Naresh paid the amount. अनिल क्या करा, ड्यू डेट के ऊपर बिल लेकर जाकर नरेश को दे दिया. नरेश वो बिल लेकर कैश पे कर दिया. अब कैश आ गया. कैश अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीव्ड, बीइंग द बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट.
These are the journal entry in the books of Anil. Now in the books of Naresh, Naresh is the drawee. First of all, he purchased the goods from Anil. Naresh has purchased the goods from Anil. So entry will be purchases account debtor to Anil account. Being the goods purchased on credit. Being the goods purchased on credit. Now he is making the payment. अब पेमेंट कर रहा, कितना तक पेमेंट कर रहा हूं? 1600. 20% of 8000, it comes to 1600. तो अनिल अकाउंट डेटार 1600, बट ही इज नॉट पेइंग कंप्लीट 1600. उसमें से 2% डिस्काउंट मिल रहा, तो नरेश इज गेटिंग द डिस्काउंट. डिस्काउंट इज अ गेन, सो डिस्काउंट अकाउंट इज क्रेडिटेड 32 rupees. And how much cash he will pay? 1568. So entry will be Anil account debtor 1600 to cash 1568 to discount 32. अब देखिए, जो डिस्काउंट लॉस है उन्हें डेबिट करेगा और जो डिस्काउंट गेन है उन्हें क्रेडिट करेगा. तो नरेश के लिए डिस्काउंट गेन है तो ही विल क्रेडिट द डिस्काउंट, और अनिल के लिए डिस्काउंट लॉस है, ही विल डेबिट द डिस्काउंट. बीइंग द 20% of amount due paid in cash. Now he accepts the bill. Now Naresh will accept the bill which is drawn by Anil. So entry will be Anil account debtor to bills payable. Already we have discussed these entries in the short problems also. So Anil account debtor to bills payable 6400, being the bill accepted. And on the due date, अब due date 4th अप्रैल को आ गया. अब 4th अप्रैल को honored हो गया. Honored का मतलब cash paid. So entry will be bills payable account debtor to cash. Bills payable account debtor to cash, being the bill honored. So these are the entries in the books of Anil, in the books of Naresh, drawer and drawee. That's all. So this is the first main problem we have completed. Now I'll come to the next problem, second one. Amar draws a bill on Bharat for rupees 15,000. Amar draws a bill on Bharat. So Amar is the drawer, Bharat is the drawee. Bharat accepts the bill and return it to Amar. Amar endorses the bill to Chetan. Now endorsee is there. अमर क्या कर रहा, भरत के ऊपर बिल ड्रॉ करा, भरत एक्सेप्ट करके वापस कर दिया अमर को. अमर ये बिल एंडोर्स कर रहा चेतन को. अब बिल चेतन के पास है. नाउ चेतन एंडोर्सेस द बिल टू दीपक. वाओ, वन एंडोर्सी छोड़कर और एक एंडोर्सी आ गया. चेतन अपने पास बिल नहीं रख रहा. चेतन हैज एंडोर्सेस द बिल टू अनदर एंडोर्सी कॉल्ड दीपक. Now the bill is with Deepak. Deepak discounts the bill with his bank for rupees 14,800. 15,000 का bill है, but Deepak has discounted the bill with his banker. Pass journal entries in the books of all the parties assuming that bill is honored on the due date. So we have to pass the entries in the books of Amar, Bharat, Chetan and Deepak. 4 parties are. तो पहली पार्टी अमर है जो ड्रॉयर है. भारत इज द ड्रॉई. अब अमर क्या कर रहा, चेतन को एंडोर्स कर रहा. चेतन किसको कर रहा, दीपक को एंडोर्स कर रहा. We have to pass all the entries assuming that the bill is honored on the due date. This is the problem. Now dates are not given. So first of all we write the journal entry in the books of Amar. Amar के books में entry. Amar has drawn a bill on Bharat. Bharat accepts the bill and return back the bill to Amar. Bills receivable account debtor to Bharat account. Bills receivable account debtor to Bharat account 15,000, being the acceptance of Bharat received. Second, now Amar has endorsed the bill to Chetan. अब अमर क्या कर रहा है, ये बिल चेतन को दे दिया, एंडोर्स कर दिया. तो एंट्री चेतन अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल. बिल जब आया था तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करे थे. अब बिल जा रहा तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे. किसके पास जा रहा है, ये चेतन के पास. बीइंग द बिल एंडोर्स्ड टू चेतन. अब देखिए, चेतन को एंडोर्स करने के बाद चेतन दीपक को दिया, दीपक फिर लेके आके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. अब बैंक ड्यू डेट के ऊपर भरत के पास आके पैसे ले लिया, ऑनर हो गया. जब बिल ऑनर हो गया तो नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अमर, इन द बुक्स ऑफ चेतन, इन द बुक्स ऑफ दीपक. अब अमर के पास कोई एंट्री पास नहीं होती क्योंकि बिल जो पास हुआ था वो पास होने के बाद लास्ट में बैंक के पास था. बैंक वाला भरत के पास गया, पैसे ले लिया, ऑनर्ड हो गया बिल. तो देयर इज नो लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ अमर, चेतन एंड दीपक. अमर की कोई लायबिलिटी नहीं है, चेतन की कोई लायबिलिटी नहीं है, दीपक की कोई लायबिलिटी नहीं है. सब पेमेंट हो गया. तो ओनली 2 एंट्रीज विल कम इन द बुक्स ऑफ अमर. फर्स्ट बिल रिसीव्ड, सेकंड बिल एंडोर्स्ड.
नाउ बुक्स ऑफ भरत, भरत एक बार एक्सेप्ट कर दिया, तो व्हेन ही एक्सेप्ट्स द बिल, द एंट्री विल बी अमर अकाउंट डेटार टू बिल्स पेएबल। जो एक्सेप्ट कर रहा उन्हें बिल्स पेएबल लिखता, और जो ड्रॉ कर रहा उन्हें बिल्स रिसीवेबल। तो यह एक्सेप्ट कौन कर रहा? भरत कर रहा। तो किसके फेवर में कर रहा? अमर के। तो अमर अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल बीइंग द बिल एक्सेप्टेड। अब एक बार भरत एक्सेप्ट कर दिया तो भरत इज नॉट बॉदर्ड व्हाट द बिल इज बीइंग डन। बिल को क्या करे? एंडोर्स करे, डिस्काउंट करे, इससे कोई मतलब नहीं है भरत को। ही विल वेट टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी बिल ला कर देंगे उसको पेमेंट कर देगा भरत। तो मैच्योरिटी के टाइम पे बैंकर ला के पेमेंट कर दे। तो when the bill is honored on due date, the entry will be bills payable account data to cash. जब बिल एक्सेप्ट करे थे तो बिल्स पेबल को क्रेडिट करे थे, जब बिल पेमेंट करने के लिए आ गया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू कैश बीइंग द बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ये किसके बुक्स में हो गया? भरत के बुक्स में। नाउ इन द बुक्स ऑफ चेतन, एंडोर्सी, एंडोर्सी चेतन, चेतन को बिल आया, किसके पास से बिल आया? अमर के पास से। अमर हैज गिवन द बिल टू चेतन। तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ चेतन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू अमर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू अमर बीइंग द बिल रिसीव्ड फ्रॉम अमर। अब चेतन क्या कर रहा? दिस बिल ही इज एंडोर्सिंग इट टू दीपक। तो दीपक अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल। When he received the bill, he had debited bills receivable account. When he is giving away the bill, bill receivable will be credited. बिल चला गया, किसके पास चला गया? दीपक के। Being the bill endorsed to Deepak. Entry is over in the books of Chetan. अब बिल किसके पास आ गया? दीपक के पास। When Deepak receives the bill from Chetan, the entry will be bills receivable account data to Chetan account. Being the bill received, किसके पास से रिसीव करे? चेतन के पास। अब ये बिल को क्या कर रहा है दीपक? ही इज डिस्काउंटिंग द बिल विथ हिज बैंकर फॉर रुपीज 14,800। 15,000 का बिल है, बैंक को बेच दिया, डिस्काउंट करवा लिया, तो ही इज गेटिंग 14,800। तो बैंक अकाउंट डेटा 14,800, डिस्काउंट अकाउंट डेटा 200 टू बिल्स रिसीवेबल 15,000 बीइंग द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बाय हुम? दीपक। अब बिल किसके पास चला गया? बैंक। बैंक का तो अकाउंट नहीं बना रहे, वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ ओनली द पार्टीज, दैट्स ऑल। अब ड्यू डेट के ऊपर बैंकर वो बिल लेके भरत के पास जाएगा, भरत के पास से पैसा ला लेगा, दैट्स ऑल। सो दीज आर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमर, भरत, चेतन एंड दीपक। सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीटेड। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। See carefully. On 1st January 2015, date is given. Mahesh sold goods worth rupees 5,000 to Pradeep. Listen carefully. Mahesh sold goods worth rupees 5,000 to Pradeep. On the same date, Mahesh purchased goods worth rupees 8,000 from Dinesh. Mahesh क्या कर रहा? पहले ही selling the goods to Pradeep. And on the same date, Mahesh has purchased the goods from Dinesh. 8,000. यानी 5,000 रुपए के गुड्स प्रदीप को बेचा और उसी दिन 8,000 रुपए के गुड्स खरीदा। किसके पास से खरीदा? दिनेश के पास से। यानी सेल करे प्रदीप को और परचेस करे दिनेश से, राइट? महेश ड्यू अ बिल ऑन प्रदीप फॉर द अमाउंट ड्यू पेएबल आफ्टर 4 months. महेश पेड रुपीज 3,000 टू दिनेश एंड एंडोर्स्ड द प्रदीप्स एक्सेप्टेंस टू हिम। अब देखिए, 5,000 रुपीज के गुड्स बेचा प्रदीप को, प्रदीप के ऊपर बिल ड्रॉ करा, प्रदीप एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, 5,000 का बिल आ गया किसके पास? महेश। नाउ महेश इज गिविंग दिस बिल टू दिनेश। दिनेश के पास से परचेस कितना किया उन्हें? 8,000। अब 8,000 का पेमेंट करना है, लेकिन बिल कितने का है इसके पास? 5,000 का बिल है, तो पॉकेट से कैश 3,000 रुपीज पे कर रहा। तो व्हाट महेश इज डूइंग? महेश इज पेइंग 3,000 रुपीज कैश and 5,000 bill he is endorsing in favor of Dinesh. Dinesh को दे दिया. Now Dinesh discounted the bill with his banker for 4,850. On the due date, the bill is honored. Past journal entries in the books of Mahesh, Dinesh, and Pradeep. Hope you understood all the points of the problem, the story of the problem. If you understand, then half of the problem is over. Not half, 90% problem is over. The complete solution will be in your mind. So give more concentration on understanding the problem. I'm explaining the problem in detail. Now Mahesh.
Mahesh is the drawer. First of all, Mahesh is selling the goods to Pradeep. How much? 5,000. So entry 2015 January 1st. Pradeep account debtor to sales. Pradeep account debtor to sales. How much? 5,000. Being the goods sold on credit. Being the goods sold on credit. On the same date, Mahesh purchased goods from Dinesh for rupees 8,000. तो परचेजेस अकाउंट डेटा टू दिनेश अकाउंट 8,000. ये सेल का एंट्री होगा या परचेज का एंट्री होगा? सेल प्रदीप को करे और परचेज जो करे दिनेश के पास से परचेज करे. नाउ महेश इज ड्रॉइंग ए बिल फॉर 5,000 ऑन प्रदीप. प्रदीप एक्सेप्टेड एंड रिटर्न द बिल टू महेश. अब महेश के पास बिल आ गया. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू प्रदीप. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू प्रदीप 5,000 बीइंग द बिल रिसीव्ड. अब ये बिल रिसीव करने के बाद दिस बिल बी इज बीइंग एंडोर्स्ड टू दिनेश. दिनेश को कितना पे करना है? 8,000 पे करना है. 8,000 रुपीज इज पेबल टू दिनेश. तो दिनेश अकाउंट डेटा 8,000. अब 8,000 में 3,000 रुपीज कैश पे टू कैश 3,000 और बाकी का जो 5,000 का बिल आया था प्रदीप के पास से, दैट बिल्स रिसीवेबल इज बीइंग एंडोर्स्ड टू दिनेश. तो टू कैश 3,000 टू बिल्स रिसीवेबल 5,000. तो 3,000 रुपए कैश पे कर दिया, 5,000 रुपए का बिल दे दिया. किसको दे दिया? दिनेश को दे दिया. अब वो दिनेश क्या करा? अपने क्रेडिटर दिनेश हैज गिवन द बिल, दिनेश हैज डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंकर. दिनेश हैज डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंकर. और बैंकर क्या करा? ड्यू डेट के ऊपर प्रदीप के पास से पैसे ला लिया, ऑनर्ड हो गया. तो इसका मतलब नो एंट्री, फर्दर एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ महेश. महेश एक बार बिल दिनेश को दे दिया, दिनेश बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंकर पैसे ला लिया ड्यू डेट के ऊपर. तो नो एंट्री, नो फर्दर एंट्री इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ महेश. फिनिश्ड. दीज आर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश. प्रदीप. प्रदीप फर्स्ट ऑफ ऑल इज परचेजिंग द गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम महेश. प्रदीप 5,000 रुपए के गुड्स खरीदा. तो परचेजेस अकाउंट डेटा टू महेश 5,000. परचेजेस अकाउंट डेटा टू महेश 5,000 बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. उसके बाद बिल एक्सेप्ट कर लिया. प्रदीप हैज एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय महेश. तो एंट्री विल बी महेश अकाउंट डेटा टू बिल्स पेबल. महेश अकाउंट डेटा टू बिल्स पेबल बीइंग द बिल एक्सेप्टेड. राइट. नाउ ऑन द ड्यू डेट. अब कितने मंथ्स का बिल है? देखिए 4 मंथ्स का बिल है. जनवरी 1st को ड्रॉ करें. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 1st को मैच्योरिटी. मई 1st, 2nd, 3rd ग्रेस डेज. तो 4th में इज द मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट. अब ड्यू डेट के ऊपर द बिल इज ऑनर्ड. द बिल इज ऑनर्ड बाय प्रदीप. तो ऑनर्ड का एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा टू कैश. जब एक्सेप्ट करा तो बिल्स पेएबल को क्रेडिट करा, जब ऑनर्ड कर दिया तो बिल्स पेएबल को डेबिट करेंगे. बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा टू कैश बीइंग द बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. तो ओनली 3 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रदीप. नाउ इन द बुक्स ऑफ दिनेश. Dinesh has sold the goods to Mahesh. Dinesh has sold the goods to Mahesh. तो Mahesh account data to sales 8,000 being the goods sold on credit to Mahesh. अब महेश के पास से कैश आ गया. How much cash he has received? 3,000 rupees cash और बिल आ गया 5,000 का. जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे. कैश अकाउंट डेटा 3,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा 5,000 टू महेश 8,000. महेश के पास से 8,000 रुपये आ गए. अब ये बिल जो आया है, ये बिल को डिस्काउंट दिनेश ये बिल को डिस्काउंट करवा रहा बैंक से. कितने में डिस्काउंट कर रहा? 4,850 में. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेटा 4,850, डिस्काउंट अकाउंट डेटा 150 टू बिल्स रिसीवेबल 5,000. बिल जा रहा. दिस इज द एंट्री फॉर बिल डिस्काउंटेड. अब इसके बाद कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ड्यू डेट के ऊपर बैंकर हैज प्रेजेंटेड द बिल फॉर पेमेंट टू प्रदीप एंड प्रदीप हैज ऑनर्ड द बिल. प्रदीप हैज ऑनर्ड द बिल. सो नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ दिनेश. दैट्स इट. सो दीज आर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश, प्रदीप एंड दिनेश. सो दिस इज द एंड ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3. Come on students, now we'll start the next problem on bills of exchange, that is problem number 4. 3 problems already we have completed. So see the 4th problem. Suresh owed rupees 25,500 to Raj. Owed का मतलब have to pay. Suresh have to pay to Raj
25,500 on 1st March 2014. He accepted a bill. So Suresh accepted the bill. That means he is the drawee. Then who is the drawer? Raj is the drawer. Raj drawer, Suresh drawee. The amount due is 25,500. He accepted a bill for 25,000 payable after 1 month. Actually, amount due is 25,500. But he is drawing a bill for only 25,000. That means 500 rupees discount is allowed by Raj to Suresh. सुरेश के पास से 25,500 आने का है, लेकिन राज जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो 25,000 रुपीज का ही ड्रॉ कर रहा, बाकी के 500 रुपीज लॉस, डिस्काउंट अलाउड. हु इज अलाउिंग द डिस्काउंट? राज. तो डिस्काउंट विल बी डेबिटेड इन राज बुक्स एंड दैट डिस्काउंट विल बी क्रेडिटेड इन सुरेश बुक्स, क्योंकि सुरेश इज गेटिंग द डिस्काउंट. नाउ राज एंडोर्स द बिल टू हेमंत. हेमंत इज द एंडोर्सी in settlement of his debt for 26,000. Actually, Raj have to pay 26,000 to Hemant. Now, in return of the 26,000, Raj is paying 25,000 bill. जो सुरेश के पास से 25,000 रुपीस का एक्सेप्टेंस आया, वो 25,000 रुपीस का एक्सेप्टेंस राज एंडोर्स कर दे रहा हेमंत को. Actually, the amount due is 26,000. 26,000 रुपीस देने का है, लेकिन बिल दे रहे 25,000. That means Raj is getting 1,000 rupees discount. So Raj is allowing 500 rupees discount to Suresh and Raj is getting 1,000 rupees discount from Hemant. That is the problem. Hemant discounted the bill with his bank for rupees 24,800. So actually the bill is 25,000, discounted at 24,800, 200 rupees discount. Then the bill was honored on the due date. Passed journal entry in the books of all the parties. All the parties means Raj, Suresh and Hemant. First of all, we'll begin with books of Raj, drawer. Now Raj is drawing a bill of 25,000 on Suresh, allowing him a discount of 500. 500 रुपए का discount allow कर रहा हूँ, discount. So entry will be bills receivable account data 25,000. Raj is getting 25,000 rupees acceptance from Suresh. Discount allowed account data 500 to Suresh account 25,500. Actually 25,500 रुपीज आने का था सुरेश के पास से, वो 25,500 के बजाय बिल का एक्सेप्टेंस आ रहा 25,000. डिस्काउंट अलाउड 500. Being the acceptance from Suresh received for 25,000 and discount allowed 500. First entry. Now this bill is being endorsed to Hemant. So actually amount due to Hemant was 26,000, but we are endorsing the bill of rupees 25,000. Raj 25,000 रुपए का बिल दे रहा in full settlement. That means Raj is getting a discount of 1,000. तो 1,000 रुपीस डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे. तो हेमंत अकाउंट डेटा 26,000 to bills receivable 25,000 to discount 1,000. जो बिल आया था, डेबिट किए थे बिल 25,000 का, वो बिल अब एंडोर्स कर दिए हेमंत को. बिल चला गया, बिल को क्रेडिट कर दिया. राइट नाउ हेमंत हैज डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एंड ऑन द ड्यू डेट बैंक हैज प्रेजेंटेड द बिल्स टू सुरेश एंड सुरेश हैज ऑनर्ड द बिल. बिल को ऑनर कर दिया. तो ओनली 2 एंट्रीज विल कम इन द बुक्स ऑफ राज. फर्स्ट एंट्री when bill is received. Bills receivable account data 25,000, discount account data 500 to Suresh 25,500. Then this bill is being endorsed to Hemant. So Hemant account data 26,000 to bills receivable 25,000 to discount received is 1,000. That's all. These are the 2 entries in the books of Raj. Now in the books of Suresh. Suresh first of all accepted the bill for 25,000. Suresh actually how much has to pay to Rajesh? Raj 25,500. तो Raj account data 25,500 to bills payable, क्योंकि ये ड्रॉई है तो इसके लिए bills payable 25,000 to discount 500. Suresh is getting a discount of 500. Instead of paying 25,500, he is accepting the bill for 25,000. So being the bill accepted. Now on the due date. Actually, the bill was drawn on March 1st. March, April, only for 1 month. The duration of the bill is only for 1 month. तो March से April. April 1st maturity हो गया. 1st, 2nd, 3rd. 3 days grace. 4th April is the due date. 4th April. On 4th April maturity,
Suresh has honored the bill, paid the bill. The bills payable account data to cash, 25,000, being the bill honored on due date. So these are the only two entries in the books of Suresh. Now in the books of Hemant, Hemant is the endorsee. He is getting the bill of 25,000 from Raj and he is allowing a discount of 1,000 rupees to Raj. 1,000 रुपए डिस्काउंट अलाउ कर रहा हेमंत, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे. तो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा, बिल इज कमिंग 25,000, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा 25,000, डिस्काउंट अकाउंट डेटा 1,000 टू राज 26,000. राज को पे करना था 26,000, राइट? तो राज के पास से आने का था 26,000 के बजाय 25,000 का बिल आया, 1,000 रुपीज डिस्काउंट अकाउंट, बीइंग द बिल रिसीव्ड फ्रॉम राज. अब ये बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिए, तो बैंक अकाउंट डेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल. बैंक कितने में डिस्काउंट करा है? 24,800. तो हेमंत इज गेटिंग 24,800 इन हिज बैंक and Hemant is allowing a discount charges of 200 rupees to the bank and bill is given to the bank, bills receivable 25,000, being the bill discounted with bank. These are the entries in the books of Raj, Suresh and Hemant. That's it. This is the end of problem number 4. Now see the problem number 5. Ayush draws on Pratham. Ayush draws on Pratham. So Ayush is the drawer, Pratham is the drawee. 3 bills of rupees 6,000, 5,000, 4,000 respectively for goods sold to Pratham. Pratham को जो goods sold करा उसका एक बिल नहीं है, 3 bills है. First bill is for 6,000, second bill 5,000, third bill 4,000. तो total is 6 plus 5 plus 4, 15,000 rupees. यानी इसका मतलब Ayush has sold the goods to Pratham for 15,000 and instead of drawing one bill for 15,000, Ayush is drawing 3 bills. First bill 6,000, second bill 5,000, third bill 4,000, respectively for the goods sold. These bills were for 1 month, 2 month and 3 month. First bill 1 month का duration है, second bill 2 month maturity, third bill 3 month maturity. The first bill was endorsed in to his creditor Adarsh. अब आयुष क्या कर रहा? First bill he is endorsing in favor of Adarsh. तो एंट्री आदर्श अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल, फर्स्ट बिल. The second bill was discounted with bank for 4,900. Second bill, that is 5,000. This bill was discounted with his bank for 4,900. And the third bill was sent to bank for collection. On the due date, all the bills were duly met by Pratham. That means all the 3 bills were honored by Pratham. Past journal entry in the books of Ayush, Pratham and Adarsh. That's it. So here the new point is, instead of 1 bill, 3 bills are drawn by the drawer Ayush. The books of Ayush, drawer, bills receivable account data to Pratham account. Pratham is the drawee. 3 bills are there. तीनों बिल का फर्स्ट बिल 6,000, सेकंड 5,000, थर्ड 4,000. तीनों बिल मिलाकर 15,000 आ गए. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू प्रथम अकाउंट 15,000. Being 3 bills of rupees 6,000, rupees 5,000 and rupees 4,000 accepted by Pratham. Now first bill 6,000 he is endorsing in favor of Adarsh. Adarsh को endorse कर दिया, तो Adarsh account data to bills receivable 6,000, being the first bill endorsed in favor of Adarsh. Second bill he is discounting with bank. The second bill is 5,000. He is discounting with bank. तो bank account data 4,900, discount account data 100 to bills receivable 5,000. Being the second bill discounted. Now third bill he is sending to bank for collection. He is sending to bank for collection. Entry will be bill sent for collection account data to bills receivable 4,000. Bill sent to bank for collection to bills receivable 4,000. Being the third bill sent to bank for collection. Now on the due date, all the 3 bills were honored. तीनों bills honored. तो first bill क्या करा उन्हें? आयुष has endorsed the bill to आदर्श. अब आदर्श जाके प्रथम के पास से लेकर पैसे आ गया, honored हो गई, तो no entry in the books of आयुष. Second bill he has discounted with bank and banker has collected the money from Pratham, so again no entry in the books of Ayush. Third entry, he has sent the bill to bank for collection and this amount has been collected in the bank, so entry will be
bank account data to bill sent for collection 4,000. Being the third bill honored and credited in the bank account. Over. These are the entries in the books of Ayush. Now in the books of Pratham. Pratham is the drawing. First of all, he has accepted the 3 bills. Entry will be Ayush account data to bills payable. इसके लिए क्या होगा? Bills payable. तो Ayush account data to bills payable 15,000. Being 3 bills of rupees 6,000, rupees 5,000, rupees 4,000 accepted. First entry. Now first bill honored on the due date. अब एक बार बिल्स अगर एक्सेप्ट करके दे दिया तो प्रथम इज नॉट बॉदर्ड व्हाट द ड्रॉयर इज डूइंग, whether the drawer is endorsing or discounting the bill or sent to bank for collection. He is not at all bothered. He will say, I have accepted the bill on due date, present the bill, I'll make the payment. That's it. So here Ayush first bill honored, first bill maturity. जैसे ही फर्स्ट बिल मेच्योरिटी हो जाएगा, वो बिल आ जाएगा तो पेमेंट कर देंगे. तो पेमेंट का एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू कैश, बीइंग द फर्स्ट बिल मेट ऑन मेच्योरिटी, पेड ऑन मेच्योरिटी. देन सेकंड बिल, जब सेकंड बिल 2 महीने के बाद सेकंड बिल आएगा तो सेकंड बिल का भी पेमेंट कर दिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू कैश. 3 महीने के बाद थर्ड बिल प्रेजेंट करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू कैश. ये फर्स्ट बिल ऑनर्ड, सेकंड बिल ऑनर्ड, थर्ड बिल ऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ प्रथम. ऑल द 3 bills were honored. Now in the books of Adarsh endorsee. So in the books of Adarsh is receiving the bill from Ayush. So entry will be bills receivable account data to Ayush account. First bill 6,000. Being the bill received from Ayush. And this bill on due date, this Adarsh is presenting the bill to Pratham and Pratham has paid the amount. All. So Ayush got, Adarsh got the cash. Adarsh got the cash. So cash account data to bills receivable. Being the bill honored on due date. That's it. So these are the entries in the books of Ayush, Pratham and Adarsh. This is the end of problem number 5.